Hello, everyone. This is Siddhant. I work with Dalgo as a software developer and data engineer. We help those who doesn't know about Dalgo. It's a data platform. We help NGOs automate their data pipeline and also build their dashboards so that they can send to so that they can send reports to their funders and different stakeholders in their team, and it's all automated. And when we started this platform, we collaborated with one of our early NGOs who tried this with us. We are really grateful to them who worked with us for quite a bit of time and built this platform with us. I'll just quickly introduce SHRI, Sanitation and Health Rights in India. And we have different stakeholders from their team. I'll just quickly introduce all of them. Um, we have first we have Anup, who is a CEO of SHRI, and then we have Nitin, who is a VP of Operation and Strategy. And then we have Anvesh, Director of Operations. Then we have Praveen, who is also Director. Um, then we have Lajwanti. Uh, she is a M&E supervisor in Jharkhand and Basgoda North and different facilities, I think. And Anita Kumari, who is also a O&M supervisor. And now uh, Anup will share his journey, how he started with Shri, and then different stakeholders will talk about their experiences with Dalgo. Over to you, Anup. Thank you, everyone. It's great to be here. Good evening to everyone in India. Good morning to everyone in the US, and good day to everyone everywhere else in the world. First, very big thank you to the Dalgo team, Siddhant, Abhishek, everyone. We're extremely grateful for this opportunity, and it's been a really wonderful journey to get to this point. I'd also like to say a huge thank you to Dr. Helen Pitchick, who is on the call. She is, no longer full time with our organization, but was instrumental in building this data system for us. And I'm just very proud of the team: Prabeen, Lajwanti Didi, Anita Didi, Anvesh, Nitin. Very proud of everyone for putting this together. Anvesh, do you want to go to the next slide? So I'll tell you a little bit about our organization, Sanitation and Health Rights in India. It's funny that we're here talking about sort of tech integration. We started out as an organization that in very rural Bihar, we all noticed and we all know that in places like rural Bihar, there are no toilets. And as a result, there has been a huge issue of open defecation. And it's very funny because we started out as an infrastructure organization. And I don't think if 10 years ago you had told me that we're going to be doing tech data integration, I would have been very confused. How does this all come together and how does this all work? But the reason it's important, and I'm so excited for my team to present to you why it's important, is because, we all have toilets in our homes. We're all part of the fortunate few that have the toilets in our homes, the infrastructure. What we do is what you see in this red box here, which is we operate these facilities and we monitor these facilities, much like you would do in your own home, right? You clean it, you make sure it's working, and when it's dirty or not working, you have some sort of feedback that tells you it's not working, and then you fix it, right? Now, if you imagine doing this for hundreds of people every day, or thousands of people every day, or millions of people every day, you could imagine that this gets complicated, right? There's a system here. It's not an overly complicated system, but as you add more facilities and as you add more people,
the system becomes increasingly complicated. So what we do is we operate shared public toilets in Jharkhand and Bihar. And we operate public toilets because private toilets are often infeasible for India's poorest. They don't have enough money to build one, even despite Swachh Bharat Abhiyan. They often don't have enough space to build one, and they often don't live on land that is theirs, or they don't have piped sewer networks. So we build these public toilets that are free to use by the public who need them. And then we implement this combined operating and maintenance system with monitoring and evaluation. And we do this to ensure that the facilities are always clean and providing high quality services as a way to encourage consistent use, right? That's our ultimate end goal is consistent toilet use over time. And so again, as you can imagine, when you operate dozens of these facilities and you have thousands of people using them every day, this can become somewhat complicated to make sure that all of the facilities and all of the stalls are high quality. And that's why we are now relying and building these sort of tech-enabled solutions with our partners at Dalgo to ensure that our facilities are always providing the highest quality services and that our staff are always well informed as to what the issues are so that they can rectify them in a timely manner. Next slide, please, Ambesh. So this is just to summarize our impact. And again, we wouldn't have this impact if it weren't for our staff and if it weren't for our staff who are now so good at using these digital tools that the amazing team at Dalgo have helped us build, right? So we operate 20 facilities, 5 in Bihar, 15 in Jharkhand, across 5 different districts. These facilities have an uptime of 99%. That means 99% of the days they are open and they are providing high quality services. So that's something that we take immense pride in, is making sure that these facilities, it's not just about the infrastructure, it's about making sure that the infrastructure is there and it is usable and that people feel happy and safe using it. Overall, our facilities were used over 2.2 million times in 2024. Again, something we're extremely proud of. If you look at our individual facility data, you can see consistent use across all the days in the year, indicating that people are willing and able to use our toilets. And then we spend just 3.06 rupees per use, right? An indication of our cost effectiveness. So what that basically means is that on a monthly average, whatever it takes to, whatever our total cost is for maintenance, and you divide it by the number of uses, it comes out to about 3 rupees per use, an indication of our cost effectiveness. I'm going to turn it over to Nitin now. Thank you, Anup. Hello, everyone. I am Nitin. I am the Vice President of Operations and Strategy at SHRI. And today I'll be explaining about what do we do, what Anup was explaining, that our facility staff use the basic digital tools. So I will be using a mix of Hindi and English so that everyone get to be on the same page. तो you can see these 4 forms जो नीचे में आपको दिख रहे होंगे. एक पहला है डेली यूज. जैसा अनु बता रहे थे कि हम लोगों के लास्ट ईयर लगभग 22 लाख लोगों ने यूज किया हमारे 20 फैसिलिटीज को. तो ये नंबर हम लोग कहाँ से आता है? ये नंबर आता है एक हमारा जो कोबो का फॉर्म है, जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है कोबो. उस पे डेली जो हमारे डेटा स्टाफ एंट्री करते हैं, जो आगे हम लोग दिखाएंगे आपको. और वो डेली यूज का जो डेटा है वो जेंडर वाइज और एज ग्रुप वाइज दोनों आता है, बॉयज, मेन, वुमेन, गर्ल्स का. एंड देन हमारा सेकंड जो फॉर्म है वो है डेली स्टाफ चेक इन, विच इज एन अटेंडेंस फॉर्म. और डेली जो है हमारे स्टाफ जो अपना अटेंडेंस लगाते हैं. फॉर एग्जांपल क्लीनर, नाउ वी हैव अ रूल कि एटलीस्ट यू हैव टू क्लीन ट्वाइस अ डे. सो यदि वो क्लीनर है, उनको यदि 10 बजे करना है, तो हाउ डू वी नो दैट वेदर दे क्लीन्ड और नॉट? एनीवन गिवन आवर फैसिलिटीज आर इन डिफरेंट प्लेसेस नीड्स टू बी मॉनिटर्ड. और इस कारण से हम लोगों ने ये सिस्टम रखा है कि जब वो जाते हैं तो अपने वो बारकोड को स्कैन करते हैं एंड वी कैन सी दैट इन द स्टाफ चेक इन रिपोर्ट. तीसरा है डेली इश्यूज एंड रिजोल्यूशंस. एज अनूप वाज एक्सप्लेनिंग, like any private toilet, our facilities also have different kinds of issues: electrical, plumbing,
इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो सही टाइम पे डिसॉल्व हुआ या नहीं उसको ट्रैक करने के लिए we have this third form and system called daily issue. The last one is called weekly photos, which is about every Sunday all the facilities staff they upload the weekly photos, the photos of the facility, और वो ये दिखाता है कि the facilities are clean, they are hygienic, they are safe, they are sanitized, उसका lighting ठीक है, and people also then when they see the report and the dashboard they also have a belief and confidence in our transparent operations. Next slide, Anvish. This is the data flow which I was referring to in the last slide. कि जो हमारे डेटा स्टाफ है, आप देख रहे होंगे 1 नंबर फोटो को, वो हमारा जो टैबलेट आपको एक दिख रहा होगा छोटा सा, उस टैबलेट में दे एंटर दीज कोबो फॉर्म्स जो आप नंबर 2 में देख रहे हैं, विच इज अ यूज रिपोर्ट। और इसमें आप देखिएगा कि चार आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसमें जो आगे अन्वेष एक्सप्लेन करेंगे और विस्तार से, तो बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन, चारों कितने कितने लोग आए वो यहाँ पे डेटा एंट्री होता है, जो कि बताता है कि आज इस फैसिलिटी में इतने लोगों ने हमारे फैसिलिटी को इस्तेमाल किया, which also proves that how we have been able to deliver high quality sanitation services in these facilities. जो तीसरा आप फोटो देख रहे हैं, that's जो ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट हो रहा है थैंक्स टू Dalgo, and we will again explain what used to be our system before Dalgo, what is now, but this is the automatic report which is thanks to Dalgo and SHRI's collaboration, which gives a holistic picture of every facility's use, issues, weekly photos, and also the attendance, the check-in form, the 4 forms which I just explained in the last slide. जो आप लास्ट फोटो देख रहे हैं, that's the dashboard, और ये जो डैशबोर्ड है ये अगेन एक एक्सटर्नल फेसिंग है, जो इंटरनल रिपोर्ट है, जो ऑटोमेटिक रिपोर्ट है वो इंटरनल फेसिंग है, and that dashboard also is getting automated thanks to the Dalgo system because of this integration between Kobo and the Dalgo systems. So जो भी हमारे फर्स्ट फोटो में स्टाफ ने अपलोड किया वो सारा आपको दोनों इंटरनल रिपोर्ट और एक्सटर्नल डैशबोर्ड दोनों में ऑटोमेटेड डेटा चली जाती है। लास्ट नेक्स्ट स्लाइड। So before Dalgo, जो हम बात कर रहे थे कि पहले क्या होता था, and you know we have Helen in the call who used to work on this, and so I'm so happy. Thank you Helen for joining this call. जैसा आप देख रहे होंगे इसमें अगेन which I was explaining कि फैसिलिटी स्टाफ डेटा एंटर करते हैं, जो 4 फॉर्म्स की बात हम कर रहे थे वो आपको चारों फॉर्म्स यहाँ दिख रहे हैं। तो पहले वो एक जाता था गूगल शीट में वो डेटा, और उसको फिर हेलेन जो है वो आर स्क्रिप्ट को रन करके, आर डेटा को रन करके, ये जो आप राइट में देख रहे होंगे मंथली कंपाइल्ड रिपोर्ट वो जनरेट करती थी। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक एक्सपर्टीज वाला आदमी चाहिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट नॉलेज, एंड देन इट आल्सो टेक्स टाइम, 5 to 7 hours per week, and then we cannot have a real time idea about what's happening on the ground facilities, which now we can get, which we'll see in the next slide. And similarly the dashboard also was not automated with whatever entry the staff were doing at the facility side. Next slide English. Now as if you can see here after Dalgo, वो इसमें यही हुआ है कि पहला हाफ तो आपको सेम दिख रहा होगा, जो लेटर हाफ आपको दिख रहा है on the right side. So you can see how Dalgo has entered this picture of collaborating with us, and we are really thankful for that, as Anup was also earlier mentioning. और अब क्या होता है कि जो भी डेटा एंट्री होता है हमारे फैसिलिटीज में, जो भी ये डिफरेंट फॉर्म्स थे, वो अब क्या होता है कि रात के 10 बजे Dalgo के सिस्टम का एक अपना वो सिस्टम है कि रात के 10 बजे it syncs, and whatever data was uploaded by the facility staff on all these Kobo forms, वो सारा जो है हमारा इस राइट साइड में जो ऊपर में आपको रिपोर्ट दिख रहा होगा ऑटोमेटेड डेली रिपोर्ट, वहां वो पूरा डेटा आ जाता है। सो जिससे ऑब्वियसली एज यू कैन अंडरस्टैंड फॉर मी एज यू नो ऑपरेशंस डूइंग लाइक हैंडलिंग रिमोटली, और अनूप वर्किंग हियर with his team, and Praveen ji who will speak later you know for his work in Bokaro in Jharkhand, सारे लोगों को जो हमारी लाजवंती दी है मिनी सुपरवाइजर वो अपना काम कर पाती हैं। So everyone gets to do what needs to be done accordingly to fix a problem, to track the use of the facility, and also the quality of our facilities. और जो नीचे आपको दिख रहा होगा automated dashboard, which is external facing for funders, government and community, वो भी अब automatically जो है वो डेटा जो हमारे कोबो में हुआ अपडेट, वही सिमिलरली वहां पर भी अपडेट कर रहा है, जो आगे आपको अन्वेष भी एक्सप्लेन करेंगे। So now I'll hand over to Anvesh, who will go through the next few slides. Thank you. Thank you, Nitin. Hi, everyone. Good evening, good morning. मेरा नाम अन्वेष है. My name is Anvesh. I am the Director of Operations Monitoring and Evaluation.
And today I'll just walk you through quickly these four forms that Nitin has spoken about, just to explain SHRI ka data collection process. What is our data collection process like, and how we use all of this data to maximize our efficiency of our facilities. So the first one is daily use, as Nitin mentioned. This is a pretty important parameter for us, essentially to know कि in one day, एक दिन में, how many people actually utilize that facility. So if you check this example in this photo, we have a user who is tapping in into what we call people counting machines. So each of our facility have two people counting machines, which one is on the men's side, one is on the women's side. So a user can come in, tap into it, and then they are counted as a user for that particular day. At the end of that day, we have our facility staff. So if you see the photo on the right, our facility staff use the Kobo forms. I can show you. So the form on the left is the input form which the facility staff use. The data is divided into girls, boys, women, men. And one of the beauty of having a lot of this data, we have a humongous pile of data, is that we can actually figure out if, for example, in our case, using simple calculations, trying to calculate if on a particular day the number of users was unusually high or unusually low. And based on this, the output that we get is, thanks to Dalgo, we have this automated report where we have a user-friendly visual report of the daily use in our facilities, which is something not only our management staff can see, but even our facility staff can read and understand. So the second form that Nitin also spoke about was the staff barcode. Essentially is checking in the staff or staff attendance, हम जिसको कहते हैं. उसमें we have the staff ID card, which you can see on the picture on the right. It's an example of a staff ID card, which is they come in and they scan a barcode from their tab, and it marks them as present on that particular day. And this is the output that we see from that case. So every day we have all the staff that sign in on that particular day. We have a record, spanning back all the way to since we started these systems a couple of a year ago or a year or two ago. So we have all of that data each day for every facility, for every staff member. So we are trying to maximize the accountability of our staff to ensure that we are actually keeping our facilities as good as we confess them to be. The third form is the issue reporting. So this is a very important form for us. This is an important parameter, like I said, because for our facilities to be operational completely and to maintain maximum uptime, as Anup showed in his slide, we want to be sure that those facilities are usable. And if there are any issues, we want to be sure that they are rectified. And for them to be rectified, they have to first be accurately recorded. So this is how we do this recording of those issues. We have our staff who take the Kobo form. So, these three pictures here, they're a representation of what that Kobo form looks like. So they do this twice a day. So if you look on the first picture, there's a first shift and there's a second shift. So we have one form filled in each shift, and each shift the staff checks in on issues regarding electrical, plumbing, infrastructure, supplies, cleanliness, technology, etc. All of these categories under which we have. So I've shown you an example of the electrical and the infrastructure यहाँ पे, where we have specific issues under each of these categories. So we want to be sure that we are capturing the maximum number of issues on a particular day so that we rectify them and our facilities remain functional and usable for users. So this is an example of a staff who was about to record this on their shift. And on the right is actually an example of what we see every day. This is an automated report that we receive, which is all, this is all immediate feedback to us. The daily use, the staff attendance, and even this issue it's like almost like immediate feedback on how our systems are currently functioning, and if there are any changes that we need to take based on the data that we are seeing.
And finally, we have the weekly facility photo. So we don't want our facilities to be clean just on paper. They have to be clean actually in reality. And one way to ensure that is that we actually get pictures of our facilities taken on a weekly basis. So this is, the form on the right is an example of what we see every week in our weekly automated report, on our daily automated report. We can filter by facility. So based on the facility, we can see not just facility, but by date as well. So we can filter and see the particular photos of the facilities. And we have a repository of all the photos that we have of our facilities. And just to give you an example, this is what our photos look like. These are the kinds of photos that we receive from our facility. If you can see from the pictures 1, 2, 3, these photos are not just of the facilities, but they're also timestamped. They're also geotagged. We have all the details of those facilities so that we are having that extra layer of validation that it's not a backdated photo. It is actually a current photo of that facility. And so I want to quickly, Nitin showed you snapshots of our dashboard. So I quickly want to give you a live demonstration of what our dashboard looks like. So this is Shri's dashboard, which is for an external facing audience. And the beauty of this is that this dashboard is automatically updated every day with that Looker Studio report, thanks to the systems that we've created in collaboration with Dalgo. The first thing to note is that our dashboard is available both in Hindi and both in English. And so on the home page, you can see, as Anup mentioned, हमारे दो states हैं, Bihar और Jharkhand, where we operate our facilities. So right now, we can go into any one of these states. So for example, if we go into Jharkhand, and we get a view, a sort of a bird's eye view, जो झारखंड में हमारे कितने facilities है, कौन से districts में है. So we are currently operating in 2 districts in Jharkhand, in Bokaro and Ramgarh. So under every district, we see the facilities and their operational status. And we also have a list of the facilities that we are going to be opening up very soon. Under every one of these facilities, for example, let's take Kasmal, we have a dashboard. And what this dashboard shows, as you can see, this is loading. What that means is that this is actually syncing up with the Looker Studio report that we have, which is, as I said, updated every day. So we don't actually have to do this manually, but we get all the juicy details of our facilities. What is the status over the past 10 weeks? What is the use status of that facility? So if you can see, there is a certain stage where there was low usage, so we can actually track all of these measures, and that sort of lines up with the date that this facility was out of work for some particular reason. So these are kind of the feedback mechanisms that we have to ensure that we actually act upon it very quickly to make sure that our facilities are functional, are open. We can track, total use, the average daily use in terms of cost, the numbers that Anup mentioned. We didn't actually sit calculating this. We have our systems in place so that this is done automatically without any efforts. Now, a layer deeper, we can go into each facility and view the maintenance log of that facility. So as Nitin and I showed, the staff check-in times. So we actually make sure that it's not accountability just to us, but to the world in general, that we are actually having data transparency. Our facilities, staff members, attendance is recorded here. And also any outages. So if you remember the issue form that we have, any outages in that facility is completely recorded here. So it's completely available for an external audience to view. So we maintain, and we're pretty proud of this data efficiency that we've achieved over time, thanks to Dalgo. So now I'd like to bring in a couple of experiences from the ground itself, and we have our director Praveen ji, जो हमारे साथ बात करेंगे उनके कुछ experiences, and he'll also introduce you to some of our field team. Okay, thank you, Anbisi. Hello everyone, my name is Praveen Kumar. मैं झारखंड में, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हूं और झारखंड में रहता हूं और
मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड में हम लोग का अभी तक 15 फैसिलिटी ऑपरेशनल है और बिहार में 5 फैसिलिटी ऑपरेशनल है। टोटल कुल मिलाकर के 20 फैसिलिटी हम लोग का ऑपरेशनल। इससे पहले हमारे प्रीवियस स्पीकर हमारे मॉडल के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारे डाटा सिस्टम के बारे में, कैसे काम होता है, सब कुछ बता चुके हैं। मैं अपनी मेरे लिए किस तरीके से डाल्गो सिस्टम इफेक्ट करता है और हम लोग उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जाकर के फायदा लेते हैं, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। बाकी तो आगे ऑपरेशन लेवल में और मॉनिटरिंग लेवल में लालवंती जी और ऑपरेशन लेवल में अनीता जी अपनी बताएंगे ही डिटेल्स में। मैं अपने उसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूंगा। आप लोग लिए होंगे कि हमारे अम्बेश जी और नितिन जी बता चुके हैं। हमारे डेली उसमें 4 फॉर्म होता है, यूजर डाटा, डेली इश्यू, स्टाफ अटेंडेंस और वीकली फोटो। उसके बारे में आप लोग सुन चुके हैं और हम लोग उसी चीज को डेली बेसिस में और जैसे कि नितिन जी बता भी चुके हैं कि रात को 10 बजे पाइपलाइन को रिफ्रेश होता है और नया रिपोर्ट, ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट होता है। तो रात को 10 बजे से पहले हम लोग का सारे फॉर्म सबमिशंस कंप्लीट हो जाता है सारी फैसिलिटी में, चाहे वो यूनिट डाटा हो, स्टाफ अटेंडेंस, जितने भी फॉर्म है सारे कंप्लीट हो जाता है। तो रात को 10 बजे वो रिपोर्ट बन जाती है। तो नेक्स्ट डे हमारी सबसे बड़ी चीज ये है कि फैसिलिटी स्टाफ से लेकर के, सुपरवाइजर से लेकर के, मैनेजर से लेकर के टोटल अपने अपने लेवल में उस रिपोर्ट को चेक करके सभी चीजों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम क्या स्टेटस, एक स्पेसिफिक फैसिलिटी का क्या स्टेटस है, वो सारे देख सकते हैं। तो वो सारी चीजों को देख करके हम लोग जो है जैसे ग्राउंड लेवल में मंथली मीटिंग करते हैं स्टाफ के साथ। एक रिव्यू मीटिंग होता है, मंथली स्टाफ मीटिंग, एंड ऑफ द डे, मंथ का एंड ऑफ द डे हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया है। तो वहां पर सभी लोगों को एक हेल्प मिल जाता है एजेंडा बनाने के लिए कि हम प्रीवियस मंथ में हम लोगों का क्या क्या इश्यू आया, क्या क्या मतलब अच्छा हुआ। ये सारे एजेंडा बना करके हम लोग एक नया स्ट्रेटजी बनाने के लिए हेल्पफुल रह जाता है कि कैसे मेंटेनेंस पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आई, इसको किस तरीके से एक ठीक किया जा सकता है, आने वाले दिनों में किस तरीके का है ना हम लोगों को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए सारी चीजों को टाइम पर स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। तो ये सारी चीज वहां पर हम लोग के लिए हेल्पफुल हो जाता है। रही बात दूसरी हम लोग का ग्राउंड में हम लोग की जैसे अपने काम को बताने के लिए अब ग्राउंड में है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग्स होती है, कभी कल हमारे जो CSR पार्टनर के साथ मीटिंग होती है, बाकी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के दौरान वो लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी सैनिटेशन फैसिलिटी जो है क्या क्या स्टेटस है अभी। तो हम लोगों को जो है हमें उस वक्त जवाब देने में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हमारी स्टेटस ये है, लाइव दिखाने के लिए। आप देखिए इसको, हमारे वहाँ यूजर डाटा लाइव है, हमारे वहाँ डेली इशू, स्टाफ अटेंडेंस, टोटल कंप्लीट, मतलब एक जैसे वीकली फोटो तक जो आप लोग अभी सुने हैं कि टाइम स्टैम्प कैमरा से वहाँ का फोटो वहाँ पर अपलोड किया जाता है। तो वो एक है ना एक हाइजेनिक कम्युनिटी सैनिटेशन फैसिलिटी ऑपरेशनल लोगों को दिखाने में एक हम लोगों को मददगार साबित होती है कि हम लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास कुछ एविडेंस है। हम लोग इस रिपोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में डेमोन्स्ट्रेट करने में सक्षम हो जाते हैं। तो दूसरी चीज है और हम लोग एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं कि पहले क्या होता था कि हम लोगों को डाल्गो सिस्टम से पहले कुछ फैसिलिटियां थी है ना हमारे पास। तो सब कुछ मैनुअल हुआ करता था कि किसना यूजर आया, हमारे फैसिलिटी स्टाफ वहां बैठ करके वो कॉपी में लकीरें खींच रहे हैं और काउंट कर रहे हैं और उसको एक्सेल शीट में चढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं फोटो, वीकली फोटो। तो वो सारी चीजें हुआ करता था। लेकिन अब वो सारी चीजें हमारी एक सिस्टम को के थ्रू, जैसे आप लोग पहले सुन चुके हैं, पीपल काउंटिंग मशीन के थ्रू और एक ऑटोमेटिक रिपोर्ट सब कुछ एक रिपोर्ट बन जाती है। तो आज की डेट में हमारी एक भी चीज रिपोर्ट में मैनुअल नहीं है, कंप्लीट एक डिजिटलाइज, एक ऑटोमेटिक डिजिटलाइज रिपोर्ट हमारे पास होता है, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है हर एंगल से, मॉनिटरिंग एंगल से, ऑपरेशन एंगल से।
और लोगों को, है ना, एक स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करने के एंगल से, हर चीज से। तो ये चीजें जो है अब हम लोग को एक्सपेंशन के तौर पर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि मान लीजिए आज हमारे पास 20 फैसिलिटी ऑपरेशनल है, कल हमारे पास 100 फैसिलिटी हो जाएगा, है ना, 200 फैसिलिटी हो जाएगा। ये चिंता होती थी पहले कि हम लोग कैसे उसको मॉनिटरिंग कंट्रोल करेंगे। तो अब जो है हमें एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम इस तरीके से इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके सभी फैसिलिटी की क्वालिटी, सभी फैसिलिटी के जो है ना, एवरीडे स्टेटस को कंट्रोल कर पाएंगे। वो कॉन्फिडेंस पैदा होती है और उसके अनुसार हम लोग आगे एक्सपेंशन के बारे में फुली कॉन्फिडेंसली प्लान कर रहे हैं। तो ये है ओवरऑल। मैं अब आगे जो मॉनिटरिंग के एंगल से हमारे जो सुपरवाइजर किस तरीके से वो लोग करते हैं, आगे लाजमती जी बताएंगी। ओवर टू यू लाजमती। थैंक यू प्रवीण सर। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम लाजवंती है। मैं झारखंड की बोकारो जिला से बांसगुड़ा उत्तरी की डाटा स्टाफ के साथ साथ एमएनई की मॉनिटरिंग सुपरवाइजर हूँ और मैं 15 फैसिलिटी का यूजर डाटा देखती हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बात करना चाहती हूँ डेलो के बारे में कि वो हमारे किस तरह से मदद करते हैं। पहले हम लोग लकीर खींच कर डाटा काउंटिंग करते थे और उसे अपलोड करते थे, बट अब से हम अपने साइड में बैठ करके भी सारे फैसिलिटी का डाटा, यूजर डाटा और स्टाफ अटेंडेंस, डेली इशू और साप्ताहिक फोटो देख सकते हैं। बात करते हैं यूजर डाटा का, तो हम देख सकते हैं कि किस फैसिलिटी ने अपने साइट से यूजर डाटा अपलोड किए हैं या नहीं किए हैं, ये हम देख सकते हैं। और डाटा हाई है या लो है, या किसी फैसिलिटी ने डाटा अगर अपलोड करना छोड़ दिए, भूल गए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे झारखंड से आज़ाद नगर की है, बोकारो से, जो अगर यूजर डाटा कंप्लीट है सभी साइट का तो वो नॉर्मल में है और डेली इशू सबमिट किए हैं, सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों, तो वो सर। और अगर स्टाफ अटेंडेंस में भी अगर सभी फैसिलिटी से किया हुआ है, तो जैसे बात करते हैं कि दुंगी बाग में डाटा स्टाफ 2 का अटेंडेंस डबल हो गया था, तो वो भी दिख रही है हमारे। इसी तरह हम अगर किसी साइट द्वारा यूजर डाटा अपलोड करना भूल जाते हैं, तो हमारे पास एक और डेक द्वारा दिया गया है कि अगर भूल गए हैं तो बैक डेट में जाके हम लोग फिर से यूजर डाटा अपलोड कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि अगर गलत डाटा अपलोड कर दी गई हो, तो उसे भी हम लोग करेक्शन शीट पे जा करके ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कस्टमर में ही 20 तारीख का मेन साइड में डाटा रॉन्ग था, जो रेड कलर में दिख रही है, उसी तरह डाटा जो सही डाटा है वो ग्रीन कलर में है, वो हम लोग करेक्शन शीट में जा करके अपलोड करते हैं। उसके बाद कोबो के वेबसाइट में वो डाटा ठीक होती है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अनीता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने एमएनई की बारे में बताएं। हेलो, थैंक यू दी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अनीता कुमारी है और मैं झारखंड स्टेट बोकारो से हूँ और मैं एक फैसिलिटी के स्टाफ के साथ साथ ऑपरेशन सुपरवाइजर हूँ। और मेरा काम होता है कि डेली हर साइट का ऑटोमेटिक रिपोर्ट चेक करके उनसे कॉल करके अपडेट लेना। डाल्गो ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से इस तरह मदद करता है कि ऑपरेशन का स्टेटस के बारे में पता चलता है, मेंटेनेंस स्टेटस के बारे में पता चलता है मुझे, और संचालन के बारे में, और वहाँ क्लीनिंग सप्लाई की ज़रूरत है या नहीं इस बारे में। यदि वहाँ पे किसी चीज़ या फिर किसी क्लीनिंग सप्लाई की ज़रूरत है, तो ये चीज़ मैं फिर जो हमारे जो ऑपरेशन मैनेजर है मैं उन्हें बता देती हूँ कॉल के थ्रू, और वो वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। फिर अब मैं आती हूँ अपना डेली को रिपोर्ट पे कि किस तरह से मदद करते हैं वो। स्लाइड, हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा डेली कॉल रिपोर्ट है।
हाँ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, मैं इस पे सबसे सवाल करती हूँ। जैसे आप लोग यहाँ एक साइड का देख सकते हैं, आजाद नगर। आजाद नगर, हाँ, ये आजाद नगर साइड, और आजाद नगर के साइड में आप लोग देख सकते हैं कि लो और हाई डाटा भी है। ये हमने पिछले जो 6 मंथ का जो भी डाटा था उसके बेसिस पे ये उसका लो हाई डाटा एवरेज निकाला है। और फिर यहाँ आप उसके नीचे भी देख सकते हैं कि उनसे एक वहाँ के स्टाफ है मयंक, मैंने उससे बात किया है। मैंने सारा चीज डिटेल दे रखा है यहाँ पे कि मैंने कितने बजे उनसे बात किया है, फिर मैंने क्या क्या सवाल किए हैं, उनके तरफ से क्या जवाब आया है, ये सारा चीज। और इस तरीके से मेरा डाल्गो मदद करता है कि मैं वहां से ऑटोमेटिक रिपोर्ट चेक करके ये सारा चीज ये इस उस बेसिस पे मैं ये सवाल को रेडी करके उनसे पूछती हूँ। अब मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं नितिन सर को ट्रांसफर करती हूँ। अनीता, थैंक यू एवरीवन। ये एक तरीके से हम लोगों ने लास्ट स्लाइड रखा है रिकैप एंड वे फॉरवर्ड बताने के लिए, जिससे कि बिफोर वी ब्रेक इनटू Q&As आप लोग को, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट 30 मिनट में काफी बम्बार्डमेंट किया है इन्फॉर्मेशन का, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मौका मिले टू फ्रेम योर क्वेश्चंस और जो भी कोई कमेंट्स हो। तो रिकैप में लार्जली हम लोग यही बताना चाह रहे हैं, जैसा कि अनूप ने स्टार्ट किया था, कि वी श्री एज एन ऑर्गेनाइजेशन आर प्राउड टू ऑपरेट एंड मॉनिटर कम्युनिटी सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड प्रोवाइड फ्री एंड हाई क्वालिटी सैनिटेशन सर्विसेज। लार्जली ये जो अभी फैसिलिटीज हमारे 20 है वो डेंसली रूरल और पेरी अर्बन कम्युनिटीज में है इन द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड। और जैसा हमने दिखाया और अन्वेष ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया चारों फॉर्म्स के बारे में, जो अभी हम लोग को वो थर्ड पार्टी क्लाउड के साथ हमारा उसमें इंटीग्रेशन है, और कैसे उसका इंटीग्रेशन अभी हमने देखा कि डाल्गो के लुकर स्टूडियो गूगल रिपोर्ट के साथ और जो विक्स में हमारा डैशबोर्ड है उसके साथ कैसे इंटीग्रेटेड है, सो दैट जो फैसिलिटी स्टाफ हमारे डेटा एंटर करते हैं वो ऑटोमेटिकली कैसे हम लोग को डिफरेंट रिपोर्ट्स और डिफरेंट डैशबोर्ड पे दिखता है, और जिसके बेनिफिट्स के बारे में भी हमारी टीम ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो अभी आप लोगों ने सुना काफी अच्छे ढंग से फ्रॉम लाजवंती, अनीता दीदी, कि कैसे पूरा ये जो हमारी टीम है इन ग्राउंड पे जो डिफरेंट चीजें हो रही हैं उसके बेसिस पे आवर दे एबल टू इंश्योर कि प्रॉपरली ऑपरेट करें हमारे फैसिलिटीज और हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें टू ऑल द यूजर्स हु आर यूजिंग आवर फैसिलिटीज। तो उसके लिए पूरा जो ये सिस्टम है, किस तरीके से डेटा बेस्ड सिस्टम हेल्प कर रहा है। सर स्टार्टिंग में ही बोला कि जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो ब्रेक होते ही हैं, एंड हाउ वी आर एबल टू यूज दीज डेटा टूल्स टू इंश्योर दैट वी आर टाइमली रेक्टिफाइंग देम इज द कोर फिलॉसफी व्हाई वी आर यूजिंग डेटा। लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे, जैसा कि पहले भी प्रवीण जी ने बताया था एक्सपेंशन के बारे में, कि इस साल हम लोग का गोल है कि हम लोग बिहार और झारखंड में आने वाले इस साल में मोर देन 20 फैसिलिटीज को ऐड करने वाले हैं। अभी लार्जली जो हमारे वो फैसिलिटीज होते हैं वो वैसे हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाया था अंडर स्वच्छ भारत मिशन, 14 फाइनेंस कमीशन और बाकी फंड्स के थ्रू, और उसमें से काफी सारे अभी वो डिसफंक्शनल हैं, क्योंकि ऑपरेशन एंड और मॉनिटरिंग का थोड़ा सा वो जो मिसिंग पीस था जिसको अनुप ने दिखाया था अंडर दैट रेड लाइन, उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। और एक क्वेश्चन भी हम देख रहे थे Q&A में आया है, आई थिंक मासूम जी का, कि स्कूल्स में भी ये प्रॉब्लम है। तो यू आर वेरी राइट, एंड दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड मे बी सून विद द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एज वेल, टू इंश्योर कि हाउ दिस मॉडल ऑफ पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट में जो हम लोग कर रहे हैं वो और इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज लाइक स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, आंगनवाड़ी एंड अदर्स में भी वो इंप्लीमेंट हो पाए। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डू। प्लीज स्टे ट्यून टू आवर वेबसाइट, टू आवर डैशबोर्ड, आप लोग को और जानकारी भी वहां मिलेगा। एंड नेक्स्ट स्लाइड अन्वेश इज अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, एंड थैंक यू। और यहाँ पे थैंक यू, आपको लोग को नीचे एक बारकोड भी दिख रहा हूँ जो हमारे वेबसाइट का लिंक है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट को आप देख सकते हैं जिसपे हमारे डैशबोर्ड का लिंक भी है। सो या थैंक यू एवरीवन फॉर डूइंग दिस, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड अटेंडिंग। अब हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए जाएंगे। ओवर टू यू सिद्धांत। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू लाजवंती एंड अनीता। आई नो आप लोग का पहले बार था ये, आप लोग ने बहुत अच्छा किया। नाउ we see few questions in the chat. If anyone wants to speak up, please unmute yourself and ask questions directly. We will take 10 to 15 minutes based on the questions. Yeah, go ahead.
सिद्धांत, जो क्वेश्चन चैट में आए हैं, डू यू फील वी कैन सी फर्स्ट एंड देन यदि किसी को और मन में कोई क्वेश्चन आए तो वो भी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं? व्हाट डू यू सजेस्ट? Yeah, so one question from Rohil, which we can see is, hi, wondering any data on water being collected, what is the total consumption? If anyone wants to answer that. Okay, I can try that. Yeah, thank you, Rohil. अभी वाटर कलेक्शन में हम लोग जो अपना अभी जो कोई डेटा ऐसा वाटर के फोकस नहीं कर रहे हैं. वी वर थिंकिंग वंस अपॉन टाइम फॉर अ वाटर डैशबोर्ड एज वेल, क्योंकि हमारे कुछ फैसिलिटीज में वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग लाइक क्वालिटी वाटर थ्रू द आरओ सिस्टम्स एंड अदर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स. बट अभी ऐसा कोई हम लोग डेटा बेस सिस्टम वाटर के ऊपर नहीं कर रहे हैं. जो हमारे फैसिलिटीज में वाटर यूज होता है टू इंश्योर दैट दे आर रनिंग ऑन अ हाई क्वालिटी सर्विसेज, उसको भी हम लोग अभी कोई डेटाबेस सिस्टम से ट्रैक नहीं कर रहे हैं. हमारे स्टाफ ये इंश्योर करते हैं कि पानी हमेशा रनिंग वाटर रहे फॉर आवर फैसिलिटी यूसेज. बट या, मे बी अ गुड सजेशन व्हिच वी कैन थिंक अबाउट गोइंग फॉरवर्ड. थैंक यू रोहिल फॉर योर क्वेश्चन. There is one more question from Arun. When the staff already have a tab having a feedback mechanism by actual users by clicking green, yellow, red, like we have in say Decathlon, will give a great idea of actual user experience to the managers. Data entry by ground staff may not be most reliable in this regard. What do you think? Yeah, I can answer that. It's a good question from Arun. I think the question is really getting at this idea of the data reliability. So there's two things on this. First, with any data collection effort, there's going to be some bias here or there. In fact, there was a question earlier in the chat about if people don't scan the card, what happens to the use? So, our first goal is to make sure that everyone feels comfortable in accessing the toilet. And so if they don't scan the card, it's fine. It's okay. And so what this means is that it could be that our use is maybe a little bit low, or maybe someone accidentally taps the card twice. And so so these kinds of issues in data collection might be there. Similarly, there might be some issues with, are the staff just reporting things are good to make it seem that things are good, or are they only taking photos of the stalls that have been cleaned immediately, right? So part of what we're doing is we're working with the local, the district level water sanitation committees and members of those committees to start a spot checking program. So these people will come and randomly once a month conduct spot checks at our facilities as a way to validate the data and provide reports on what we're doing. Our goal is not to just show that the toilets are clean. Our goal is to respond to issues to make sure that the facilities are always providing high quality services. That to us is the gap currently in sort of public toilet service provision in India. And so our goal is to just build a very strong system around it. Now, I would also say that it is probably likely and easy or feasible, I should say, to also have routine ways of collecting direct user feedback. As Arun has mentioned, you can have different buttons there that very easily collect data from users. And that's something we can certainly try to use and implement in the future as well to collect that direct user feedback. I would just say, again, it's possible then that there would also be bias in that, either good or bad. So there's just a larger, with any data collection effort, there's always a larger looming issue of the bias in one way or the other. And there's so many sources for that. Siddhant, do you think there is any other question from chat which we can pick? Or if someone wants to also ask, आप लोग अपने आप को unmute करके पूछ भी सकते हैं इस बीच में. Arun, yes, please go ahead and ask. I think he's interested.
I'm so sorry. Let me just fix that 1 sec. Okay. Yeah, you can unmute yourselves and ask questions now. So sorry about that. Hi, Shri team and everybody and Lajwanti ji, Anita ji. बड़ा मजा आया, अच्छा लगा सुन के आपकी सारी बातें. And guys, great job, Siddhant. So and especially with toilets and this whole data collection, automating it is the next step and fantastic, right? And the two things. And thank you for the session. Very, very, very insightful. So I'm from Pinkish Foundation, and we work on menstrual health and hygiene, and we work with absolute interior schools, rural schools in aspirational districts, tribal districts, a lot of them. And we are typically putting IoT-based sanitary pad vending machines. And through GPRS, we get the data, and we are building similar dashboards. And every machine, so that through sensors, we can kind of get a hang of how many pads are there in every machine, when to refill, what is the consumption pattern for each girl, all that. Now, one of the things, so that is working wonderful. The challenge is that in all these schools, while we kind of built lakhs and lakhs of toilets, they are mostly dysfunctional. The water is not there. They're very dirty. And we have been doing some very detailed baseline reports across Telangana, Chhattisgarh, Uttarakhand, other places. So the next big project that we are kind of looking at is, apart from the vending machines, we rejuvenate these toilets and maintain. And I think the whole experience, Anup, of SHRI, if this is something we can connect on and kind of build on your expertise, experiences, and everything, and maybe collaborate, that's one. And of course, Dalgo, Siddhant, having this system and probably improving that so that our girls and boys in the schools have better toilets is something which is I think, very potential partnership. And I just thought I'll kind of put that across, and then we'll connect. Yeah, Arun, thank you so much. You know, I really appreciate your, first of all, I mean, the work you're doing sounds incredible. And there's a couple of very specific things I want to respond to. So first of all, yes, you know, I would love to connect with you offline, and we can get your email address and we can fix a time. You know, there's a couple things going on here that you've mentioned. As it relates to menstrual hygiene health, we're not doing a very good job with that right now. I'll firstly acknowledge that. And so we would love to learn from you, you know, if there's how do we improve our service offerings around that particular sanitation need for women and girls, given how important it is. There's a second part of what you're talking about, which is how we see ourselves working in the future, which is, you know, if you have access to certain communities, India is obviously a huge place with huge numbers of people. If you have access to your communities in Chhattisgarh, Orissa, wherever it might be, we want to work with you to support your work in that as it relates to sanitation. So if you have connections with schools, we can help you deploy this system at schools to ensure that these schools are providing these high quality services. That's what we're sort of now calling SHRI in a box, right? Where we just work with you to help you serve your communities in this way. So we would be happy to think about this. And as far as the rejuvenation part is concerned, we are also more than happy to work with you and help figure out and collaborate how do we get government funds for this work. What we have found is that the government is really eager to use CSR funds, their own allocations for funds through their various sources for infrastructure-based projects. They're eager to do that. What they're less eager to do is work on sort of these systems, human systems kinds of things, because it's harder to show, right? So anyway, I think yes, the short answer is yes. We would love to find a way to meet and try to figure this out together. Thank you. Siddhant, any quick question which we have in the chat? I try to answer a couple, but yeah, in case if there are some others. Yeah, there's one more question from Tanvi. If you want to unmute yourself and ask directly, otherwise I can just ask. So her question is, what is the minimum educational qualification required for the staff? How frequently does the team receive training
on monitoring, and how much time/weeks or month is needed to adequately train the staff on these monitoring tasks? Praveen, do you want to? Praveen has been sort of amazing at leading the trainings, and I think he can talk about all of this. I will say, from my perspective, the goal is to train people with any educational background. We want to work wherever we can, meet the community where they're at. But I turn it over to Praveen to answer that. Yeah, thank you, Anup. Basically, हम लोगों का सबसे पहला गोल ये होता है कि जो भी फैसिलिटी स्टाफ है उसी कम्युनिटी से बिलोंग्स करे। ये सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। उसी कम्युनिटी से बिलोंग्स करने वाले हमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हो। हमें बस इतना होता है कि टैब को ऑपरेट करने के लिए आज के दौर में स्मार्टफ़ोन जो चला सकता हो, बस उतना हमारे लिए काफ़ी है। स्मार्टफ़ोन जो चलाने वाला है, वो अपना हमारे जो टैब और वो सिस्टम को अच्छा से चला सकता है, बस उतना ही है। और रही बाकी और उसको रिपोर्ट को भी देख सकता है। बाकी हमारे जो सुपरवाइज़र्स मैनेजर्स हैं, उसी तरीके से हम लोग एक और फ़ोकसिंग करते हैं, जो हमारी फैसिलिटी स्टाफ है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद उसी को सुपरवाइज़र बनाएँ, वही ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद उसी को मैनेजर बनाएँ। ये एक फ़ोकस रहता है, एक प्रायोरिटी रहती है, बट फिर भी हमारी जो काम के सिस्टम में, जो ग्राउंड में फैसिलिटी लेवल में हो, सुपरवाइज़र लेवल में हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखने से भी ज़्यादा उनकी पोटेंशियल क्या है, उनकी काम प्रति हमारी क्या उनका जिस सेक्टर में हम लोग काम करें उस प्रति उनका क्या पोटेंशियल है और क्या है ना अ, उनकी भावना है, उसको देखा जाता है और उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। I And hope just you to got add to it. that, thank you, Praveen ji. And just to add to what Praveen ji said, training वाला आपने एक part जो पूछा था तन्वी, तो उसमें अभी हम लोग इनफैक्ट अन्वेश is working on training manuals. तो हम लोग के पास अभी इनफैक्ट हेलेन हमारे साथ जब थी तो उन्होंने बनाया था एक मॉनिटरिंग मैनुअल, और अभी हम लोग एक ऑपरेशन मैनुअल भी बना रहे हैं with Ripple Works, one of the organizations here which tries to make the work better for non-profits. तो हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे ट्रेनमेंट मैनुअल्स जो हैं वो भी ऐसे हो, फॉर एग्जांपल जैसा कि अरुण जी ने बोला कि इफ इज वर्किंग इन उत्तराखंड, तो आज के दिन में क्योंकि हम लोग भारत के सारे पब्लिक टॉयलेट्स या स्कूल टॉयलेट्स को कवर नहीं कर सकते, व्हिच इज द रियलिटी, so we'll be collaborating with those organizations so that they can also use our training manuals and provide high quality services in these facilities. So yeah, training is an important, and we now work on training different manuals, different systems ke sath, and we are still trying to develop it better to work with other partners. One more question from Tanvi. Are you also working on raising awareness about healthy sanitization practices and the use of public toilets? Yes, the short answer is yes. And I think this goes back to Praveen's point about working with local community. Taking the example of menstrual hygiene health, again, Lajwanti Didi and Anita Didi have been crucial in this aspect of our work as it relates to best practices, learning from our female users, adolescent girls and women, learning what their needs are, and how we can meet those needs. So, in our facilities, we provide information about the importance of hand washing, using soap. During COVID, for instance, we had so much information about social distancing, where people can get vaccinations. So the short answer is yes. We're always trying to help raise awareness around sort of individual level health behaviors, but on top of that, and what we think is even more important is providing services and improving access to high quality services, which then we think people are using. Thank you so much, everyone. I take it there aren't any more questions, so we'll close out the call. Thank you so much for joining.